So we are learning equations of motion. So before we start this, I would help you recall the primary integration things, right? So integration and differentiation thing. So the first one is d by dx of x to the power n, where n is a constant. This is nx to the power n minus 1. I hope all of you remember it. If you don't remember it, then things will be difficult for you in integration. In kinematics. The next one is integral of x to the power n dx. Right? This is x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant c. Okay? These are the two integrations, which are two mathematical applications which we will require. And of course, how to apply the limits. If I want to integrate some function fx from a to b, the result of this function is another function gx from a to b. Now, how to solve it? We substitute the upper limit here. So it is gb minus, we substitute the lower limit here, it is ga. So these are some of the things which we need. एक और है last, that is integral of dx. This is nothing but integral of x to the power 0 dx. So this will be x plus constant c. Right? तो ये चार चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए. You should be able to recall these four expressions which you have already learned. Anybody has any confusion or any challenge in recalling these four functions? Any one of you? Could you explain the last one No, once? sir. क्या बोल रहा है? The last one. लास्ट वन में क्या हुआ? I remember the first three. I'm not able to recall the last one. ये x to the power 0 क्या होता है? 1 होता है ना, तो dx के Yes. पहले 1 लगा ले. Oh, तो x to okay. the power 0 हो गया ये. तो 0 में क्या लिखेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना दोबारा से. x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus constant c. So this is x plus c. Got it. So now regarding these equations of motion. First of all, you should, whenever you are using some equations, always remember the conditions to use it, right? So equations of motion are valid only, for an object only when it is moving with constant acceleration. Equations of motion are valid for an object only when it is moving with constant acceleration, right? All of you are aware about these expressions of what is acceleration? It's rate of change of velocity, right? I hope all of you. Yes, sir. Yes, sir. Velocity is rate of change of displacement or Position. rate of change of position, right? Yes, sir. ये पढ़ा है आप लोगों ने. So this is तो यहाँ पे we have an object. Please pay attention. Don't write. These are very important relations. और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा काइनेमैटिक्स में. इसलिए प्लीज बी अटेंटिव. ओके. ऋग्वेद माने नहीं आया है क्या आज क्लास में? कहाँ हो तुम? दिख क्यों नहीं रहे हो पर? हाँ हाँ बेटा, नाम बदल लिया कर तू. मैं ना तेरा नाम ढूंढ रहा था तो नहीं दिखा मुझे, तो मैंने पूछ लिया. ठीक है, चलो शाबाश. तो सब है आज मेरे ख्याल से. सो दिस इज t is equal to 0. This is t is equal to t. These are the two different timelines. Okay. This is position x is equal to
x naught. This is position x is equal to x naught, but the particle is at this location. And of course, it is moving with some initial velocity u and with a constant acceleration. Acceleration a is constant, and this location is, the position of this particle is x is equal to x. X is equal to, sorry, my bad. This is x is equal to x. This is 0. This is x naught. Okay, we are assuming that the particle is moving along x-axis. We are deriving the expressions for particles moving along x-axis, but then we will generalize it by putting vector notations for all the 3 dimensions. Okay? We will generalize it for all the 3 directions or all the 3 dimensions by putting vector sign over it. So we are deriving, always remember, we are deriving the expressions for 1 dimension motion, but by putting vector notations over it, we generalize them for all the 3 dimensions. Right. Now what we have to find is, at some point x is equal to x, what is the velocity of the particle? Okay. What is the new position of the particle? So all these we want to find. We want to find what is x, what is v, right? And of course, we also want to find what is the displacement of the particle. This is the displacement, right? Final position minus initial position. So we will try to find this position also. Sorry, this displacement also. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Objective clear है discussion का? Say yes or no. Yes, sir. Yes, So sir. what is that x, sir? X is equal to? X is x. No, Question in the first diagram it says like x 0 and then the next one is like x equals question mark. अरे भाई, we have to find x. X is representing the position of the particle. Oh, It is along x-axis. As I said, the particle is moving in 1 dimension motion. 1 dimension का मतलब it is moving along x-axis. Clear? yes, sir. So at t0, the particle was at x is equal to x naught. At t is equal to t, the particle is at x is equal to x, which we don't know. So we want to find what is that x, what is the displacement s, what is the velocity v. Okay? All of you. Context clear hai sabko? Yes, sir. Objective of discussion is clear to all of you. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Everybody. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है. Anyone who still wants to have, who still has some query? चलो मैं मान लेता हूँ किसी के पास नहीं है, तो बाद में ये दोबारा नहीं पूछ रहा मुझसे, बता कि क्या कर रहे हैं हम. So this is what we are trying to find. Now, going back to what we learned for acceleration. Acceleration is rate of change of velocity, right? All of you, I hope you remember this. Now, dv is equal to what? We take dt on the other side. So this becomes a dt. Now, whenever you want to find x, and you are given dx, what will you do? Integrate it, right? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Here also, we want to find v, right? So we integrate this dv. And once we integrate on one side of the equation, we have to integrate on the other side as well. So this is a dt. So t0 pe, what was v? At t0 on this timeline of 0, can you see v was u here? And at t is equal to t, what is v? We don't know what is v, and that is what we have to find. Clear है सबको? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग. Yes, sir. Yes, sir. t0 pe, the lower limit of time was when it was 0.
the initial velocity was u. When the time was t, the velocity is v. I hope this is clear to all of you, right? Yes, sir. Yes. Now dv is what? dv का integration is what? v. अभी सिखाया था ना dx का integration x होता है, हाँ या ना बोलो? Yes. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे dv का integration क्या होगा? The integration of dv will be, Gurudeep, you understood or not? Yes, sir. The integration of dv is v from u to v. This is equal to a. Integral of dt is what? T. We took a out. We took a constant from the expression and just integrated t. So t is from 0 to t, right? Since it's a definite integral का मतलब there are limits in this integral, so there is no arbitrary constant. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So now what I do So is, could you repeat for a minute? Yeah, what, which part you want me to repeat? So like you were telling the last point, you asked if you understood, sir. I couldn't hear because there's an issue here. I said there we are writing there are no arbitrary constants here because it's a definite integral. That's it. Hmm? Now what we do here is we will substitute the upper limit minus lower limit. So this becomes v minus u. This is equal to a. We substitute the upper limit, that is t minus 0. So we have v is equal to u plus at. This is the first equation of motion which we have derived for one dimension motion. To do it for all the dimensions, 3 dimensions, we simply put a vector notation here on those parameters which are vector. So this is the first equation of motion. Sir. Hmm. Sir, is the u initial velocity? Obviously, yes, t0 पे है ना बेटा? Oh, okay. So can we write this? अभी रुक जा भाई. So this is the first equation of motion. Remember, this is the correct format. Whenever someone asks you which is the what is the correct equation of motion, always mention the vector part. It's v vector is equal to u vector plus a vector t. When are the equations of motion valid? When the object is moving with constant acceleration. समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो भाई. So like it's in my ncert, हाँ. it was written v equals u plus at as the first equation of motion. So is it considered wrong? देखो चूंकि वो लोग तुम्हें वेक्टर नहीं पढ़ाते हैं, वेक्टर नहीं पढ़ाया ना उन लोगों ने तुम्हें. नहीं sir. हाँ, और उसने बोला भी होगा ये वन डायमेंशन के लिए है, I don't remember. तो फिर पढ़ो उसको जाके दोबारा. तो अगर वन No. डायमेंशन मोशन बोला है और वेक्टर नहीं पढ़ाया है तो वेक्टर क्यों लिखेगा वो, है ना? पर 11 एक Okay, sir. मिनट में उसका जवाब दे लूं पहले. चौधरी जी, Yes, sir. Yes. बचपन में हम लोग एक वो था हमारे पास कॉमिक्स थी एक, जानता है? तो कॉमिक्स तुम लोगों ने देखी है कॉमिक्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. जानते हो कॉमिक्स? Yes अच्छा, sir. तुम लोग कॉमिक्स जानते हो? Yes sir. I read them Yes, sir. हाँ सर Yes, मैं two times. हम पढ़ते हैं हैं? Yes कौन sir. सा कॉमिक पढ़ते हो बे? स्पाइडरमैन Sir, एंड टॉम जेरी Tinkle एंड के. एस्ट्रिक्स Sir, a lot. अच्छा, Sir, Avengers. Tinkle के. ई अवेंजर का कॉमिक पढ़ता होगा. हाँ, अरे पिक्चर देखते हो तुम लोग उसका, क्या तुम कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ेगा? वो हम लोग के समय में एक चाचा चौधरी की कहानी होती. सर आई सॉ हिज चाचा, हाँ आई यूज्ड टू सी हिज सीवीज हाँ हाँ, अरे मैं तुमको अभी एक सेकंड. तो चाचा चौधरी और साबू ये हीरो थे हमारे, मतलब ये कॉमिक्स के हीरो थे, हमारे क्या थे. और उसी में एक होता था बिल्लू. तो हम लोगों ने खूब पढ़ी है कहानी. तो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन.
In the comics, he used to be a very brilliant man. दिख रहा है ये this was, I think this was the first comic character. और इसके पहले आता था एक WG. इट वॉज वेरी, अब तो ये तुम लोग के लिए तो सब प्रिमिटिव है, तुम लोग खुद ड्रॉ कर लेते हो इतना तो। उस समय तो ये सब बनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। द फर्स्ट कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया वॉज प्राण, मिस्टर प्राण। एनीवेज, तो कहाँ गया हमारा सरदार करमन सिंह गिल? भाई वो बोलेगा ना तभी बेटा, जब वो पढ़ा देगा उसके बाद नहीं लिखेगा तो पाप किया है उसने, ठीक है? तो मैंने तो वेक्टर पढ़ाया है तुमको, तो वेक्टर पढ़ाने के बाद दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑलवेज रिमेम्बर। Okay, sir. नाउ कम्स सेकेंड इक्वेशन। कैसे निकालेंगे? तो अगेन वी विल गो बैक टू दिस इक्वेशन। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट? So I write dx by dt. Why I am writing dx by dt? Because it is moving along x-axis. So that's why I am writing it along x-axis. So dx by dt is v, right? And this v is equal to what? From the first equation, we write u plus at. तो देखो dx क्या हो गया? dx becomes u into dt plus at into dt. ठीक है? इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। यहां तक सबको समझ आया या नहीं आया? हेलो? समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, understood. Sir. हाँ हाँ। तो 0 से लेके टी तक, अरे कविश शाह आया है कि नहीं हमारा? Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है। तो T0, तुम कब छुट्टी पे जा रहे हो बाबू? Sir, Saturday. हाँ ठीक है, ये तो है टाइम। तो dx is varying from when t was 0, what was x? बच्चों देखो ध्यान से, when t was 0, what was x? x was x naught. When t was t, what was x? x was x. So integration of dx is x from x naught to x. देखो बहुत आसान है ये, u. Integral of dt is, Shubhaditya Datta, integration of dt is what? T. T, very good. So because u was constant, we took it out. So integral of dt is t from 0 to t plus, what is integral of this function? Arav, tell me what is integral of at dt? So can you repeat? What is integral of at dt? इसका इंटीग्रल क्या है? ADDT. हाँ, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब बता इंटीग्रेशन हाँ। उसका। T का एक है 1 plus C. अरे 1 प्लस सी नहीं, 1 प्लस 1। अरे 1 n plus 1 प्लस 1 होता है ना। T अरे square divided by 2. फिर तुम क्या सीवी लिख रहा है इसका? है बालक? सी कहाँ से आया था बेटा? नहीं आएगा। So this is the integration of it. Now you substitute the values here. So this is x minus x naught is equal to u. You substitute the upper limit t minus 0 plus half a t square. ठीक है? This term is what? This is final position. What is x? X is final position, right? Yes or no, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. X is final sir. position. What about x naught? X naught is initial position. So what is the value of final position minus initial position? It is, क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? ओम देशमुख बोलिए। Displacement. Very good, शाबाश। It's displacement, right? So this is S is equal to ut plus half at square, right? In vector notation, if I write, it is S vector is equal to u vector t plus half a vector t square. This is the second expression for second equation of motion. This is the second equation of motion. मेरे प्यारे बच्चों,
समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Or in the Yes, sir. second last Yes. line, Yes. dx हाँ equals udt plus at dt. हाँ, Where did we get dt from? ये टी यहाँ से लेके आया ना। Oh, oh, okay, got it. Sir. बोलो। So once we did the integration of at dt, for dt, do we have to take t to make it t? नहीं नहीं, अरे dt इज एन ऑपरेटर भाई। वंस यू ऐड टू, ऑपरेटर समझते हो बेटा? 2 और 3 है मान। तो इफ यू वांट टू ऐड 2 and 3, व्हाट डू यू डू? प्लस लिखते ना। तो वंस यू गेट द रिजल्ट 5, डू यू स्टिल राइट प्लस? No, sir. नो। सो वंस यू ऑपरेटेड दिस, once you integrated it, no need to write this dt there. Yes. है ना? So this was it, right? This is the second equation. Now, as I said, we can also find x, right? From here, you can use this expression. You can use this expression to find x, right? I'll write it here. X is equal to x naught plus ut plus half at square. But this is nothing, right? This is no equation of motion. It's सिर्फ एक उसका एक derived part है और कुछ नहीं। ठीक है? This is nothing. Only this is the second equation of motion. In second equation of motion, you get displacement of the particle. Second equation of motion, what do you get? Displacement of the particle. Okay. I hope all of you understood till this point. Anyone is having any doubts or any queries till this point, please ask. बोलो भी बच्चों, हाँ या ना? No, sir. No Understood, sir. doubts. अच्छा, अभी अभी पूछूंगा, रुको जरा तुम लोग सब। तब नहीं बताया ना, मुंह नहीं खोला तब बोलता हूँ। अभी सबको पता चलेगा। हम्म, चलिए, अब हम लोग लास्ट एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो लास्ट इक्वेशन में कहता है वो कि ये जो इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यस और नो? Yes. एंड दिस इज u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u a t। ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज v डॉट v is equal to u dot u प्लस, एक मिनट एक मिनट, ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं लिखेंगे पहले से। वी राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू, रिमेन u स्क्वायर को u स्क्वायर रहने दो, आउट ऑफ दीज टू टेक 2a कॉमन, टेक 2a कॉमन एंड व्हाट डू यू गेट? You get ut plus half at square. Can you see this? Yes, sir. Yes. If out of these two, the last two, क्या बोलते हैं इसको? Huh? Out of these two, if you How did we take get? out, क्या? How did we get 2a as common? अरे निकाल लिया 2a कॉमन, उसमें क्या है? और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहां से 2a कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा? ut आएगा। और यहां से 2a कॉमन आएगा तो क्या आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। Oh, got it. तो अब क्या आएगा ये? दिस इज व्हाट? कैन यू सी? दिस इज व्हाट? दिस इज s Yes, हाफ yes. ए टी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? तो we finally get v square is equal to u square plus
2as, or it is v dot v is equal to u dot u plus 2a dot s वेक्टर। अब ये कहां से आया, ये अभी बताता हूं कहां से आया। डॉट प्रोडक्ट याद है कि नहीं है? ऑल ऑफ यू रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. They be cos theta. हाँ, ए बी कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द स्ट्रेट लाइन, राइट? यहाँ पे एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, सो वी नीड नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। The dot product of two parallel vectors, all of you please pay attention. As I wrote it, v dot v, what is the angle between them? Once. कौन है यहाँ पर? Answer is once. एक मिनट। अविका मेहता, v dot v में what is the angle? Tasim Agarwal, what is the angle between them? V and Sir, v? 0. 0. Very good. So this is 0. So this becomes v. अविका है कि नहीं क्लास में? अविका मेहता, यस सर। तुम क्यों जवाब नहीं दे रही हो बेटा? ये सर नहीं मैंने पता है सोचा तुमको? 360 होगा। सॉरी, सर मैंने सोचा 360 होगा। 360 क्यों होगा बेटा? पैरेलल में, सेम डायरेक्शन में। यस सर। Same goes for u dot u. Again, it will be u square only. Square. Now we have 2as, right? So I wrote it as 2a dot s vector. Why I took dot product here? Because so they don't have to be in same line. नहीं, they, in one dimension, so they will be in this along the same line, right? They may be along the same direction, or they may be opposite to each other, right? It can be the case that the object might be, the displacement is along the forward direction, but the acceleration is in the backward direction, or the acceleration is in the forward direction. So that's why I wrote a dot s. When a is parallel to s, or acceleration and displacement are along same direction, are along the same direction, ठीक है? Then angle between them is equal to 0. 0. Yes or no? Yes. When A is anti-parallel to S, और A is opposite लिख लो, anti-parallel की जगह, vector A is opposite to S vector. ठीक है? Then the angle between them is, क्या होगा? 90 degree. 180 डिग्री। 90, ये देखो 180. 180 degrees, right? So always remember this, why we wrote 2a dot s. तो ये, this is the third equation of motion. आप लोग इसको एक बार पढ़िए, शुरू से एक एक स्टेप पढ़ो, ठीक है? डोंट राइट इट। लिखने से बेटा कोई विद्वान नहीं हुआ है ना? तो सबसे पहले एक एक स्टेप पढ़ो और सोचो कि ये क्यों लिखा गया है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, आस्क मी, ठीक है? हो सकता है तुम 4 बार पूछने के बाद डांट पड़ जाएगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से सीखो, नहीं डांटूंगा ये पक्का है। चलो पूछो, डाउट्स है?
पर लिखने जब ही वो लिखना तभी जब मैं बोलूंगा, पहले ये पढ़ो अच्छे से. आई एम गिविंग यू 5 minutes to read, go through each and every part of it, right? Every alphabet, why it is written. Sir, हाँ बोलो. how do we know if an object is moving in constant acceleration? दिया रहेगा. Oh, It will be given to you. And when there is variable acceleration, you will not be able to use this. Here is, it's not mentioned What? whether the object is moving with constant acceleration. It will be mentioned. If they want you to use equations of motion, they will always mention. Okay. ठीक है. So I have one question. दूसरा मत How, पूछना गलती से भी, बता. how do we know which equation are we supposed to use? अरे जैन साहब, आज तो आप उगे हैं यहाँ. अभी तो शुरुआत हुई है बेटा. अभी तो बहुत आगे जाना है. ठीक है, तो यू विल लर्न अबाउट इट, डोंट. ठीक है. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सीलरेशन दिया है, तुमसे कहता है 2 सेकंड के बाद बताओ क्या वेलोसिटी होगी, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? First, फर्स्ट वाला. अगर तुमको यू दिया है, टी दिया है, ए दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? second. अब देखो, तुमको ही पता चल गया ये तो, Yes. बिना कुछ किए. तो ऐसे ही पता चलेगा जैन साहब. हाँ भाई चौधरी जी, सब ठीक है? Sir, I have doubt. One doubt. पूछो पूछो, हाँ हाँ पूछो पूछो. Sir, डाउट, डाउट से कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछो. in the v square is equal to u plus at whole square is equal to u square plus a square t square वो वाला उसमें टू what if the why don't we take only a outside? चौधरी जी क्या है, थर्ड इक्वेशन का सारी दुनिया की किताब में एक फॉर्मेट है. पहली बात तो यह है. और उससे भी बड़ा रीजन देखो, हमें उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना था. अगर सिर्फ ए बाहर निकाल लूंगा मैं, तो क्या वो जो अंदर बचेगा वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म बचेगा क्या? है टू नहीं नहीं बचेगा. तो क्या होता है, हम जब भी इक्वेशन डिराइव करते हैं तो वी ट्राई टू राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ ऑल द पैरामीटर्स. ओके ठीक है. अब सपोज करो तुम उसको ऐसे लिखते, मान लो एस क्या था वो बताओ जी. वो था वी स्क्वेयर इज स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a एस था ना, तो हाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. हम्म ठीक है. अब अगर मैं इसको चौधरी जी ऐसे लिख दूं, 2a अंडर रूट ऑफ एस होल स्क्वायर, क्या फायदा इसका? कोई मतलब है? कोई सेंस है इस बात का? नो सर फिर तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना होता है ना, तो वो इक्वेशन यूनिवर्सल रहेगा और सबको याद रहेगा. तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. Sir, could you show the page where you explain the dot product of the third equation? हाँ, अभी लिखना नहीं है, पहले ये बताओ, दिस पेज इज डन और नॉट फॉर ऑल ऑफ यू? नोटेड और नॉट? नहीं यस सर नोटेड नहीं, पढ़ा कि no, नहीं? sir, no, no. पढ़ा ना, पढ़ा ना? हाँ हाँ Yes, sir. सबने पढ़ लिया ना? Yes, sir. कविश शाह, अविका मेहता, रिधिमा त्रिपाठी, करमन सिंह गिल, सुभादित्य दत्ता, Yes, sir. संचित. Yes, sir. Sanchit, you understood? Yes. Sir, I Sanchit, understood most why of you it. switch off your camera, Sanchit, so frequently? I never keep your camera on. Whenever I take your name, then only you switch it on. What happened? Sir, Network my is not good. Sorry, sir. Network is not good. Sir, it's not the network, sir. My web camera, it keeps getting disconnected now and then. I don't realize it most of the time. अच्छा. You understood or not?
what we Sir, learned I today? understood most of it. I'm still revising the integration ठीक है, part ठीक since है. I missed most of it. Okay, Hariharan, what about you? Sir, Where is yes, sir. Gurudeep? Where is Gurudeep? Mr. Gurudeep. Yes, sir. हाँ, you understood or not? Yes, sir. Understood, sir. ठीक है. चलो ये देखो, इसको भी देख लो एक बार. This you can write later on. This you can write later on. Just go through it. Why we have written this. हो गया? Sir, can you explain the 2AS part? 2AS. देखो 2as लिखा है ना यहाँ पर. वहां हाँ. था ना 2as, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, a डॉट एस वेक्टर लिख दिया. वो अब डायरेक्शन क्या? अभी अभी बताता हूँ. देखो, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, अब इस लाइन में दो डायरेक्शन हो सकते हैं, यस और नो. एक Yes. डायरेक्शन हो सकता है फॉरवर्ड, एक हो सकता है बैकवर्ड. एक हो सकता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक हो सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यस और नो. Yes. ठीक है. तो इफ द एक्सीलरेशन, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सिंस द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, so the displacement has to be along this direction, yes or no. Yes. You will get displaced in a direction in which your velocity is, right? Yes. You will get displaced in a direction of your velocity only, yes or no. Yes. So obviously displacement has to be in the forward direction. Okay. Now if both of them are parallel, so then we say that in this case object is accelerated. क्या है ये? Accelerate. Object is accelerated. और अगर ऑपोजिट होगा तो क्या होगा? ऑपोजिट होगा तो in this case we say that object is retarded or deaccelerated. Acceleration comes because we apply some kind of force. अभी वो नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में, अगले सेशंस में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में. तो when the force is acting in the same direction as displacement, it is acceleration. When the force is acting in the opposite direction of the displacement, then it is Retardation. retardation or deacceleration. Sir, Deceleration. Sorry. हाँ बोलो. so this is a deceleration like negative acceleration. Obviously, yes. And why it will be negative? Because the angle between A and S will be what? 180. 180. So Mm. since the angle is 180, so this result will be what? It will be AS cos 180. बोलो हाँ Yes. या ना? And this is Yes. minus AS. ठीक है? Yes. Yes. Sir, can you तो please go back to the no. नहीं नहीं, अभी इसको ये पढ़ लिया सबने. All of you done with this slide? Don't note it. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. चलो ये पढ़ो, और अगर पढ़ लिया इसको तो नोट करो इसको जल्दी से.
So done. If you are done, please type done in the comment window, all of you. जितना मैंने नोटेशन लिखा है ना, जहां जहां लिखा है पूरा लिखोगे, ठीक है? एक चीज और मैंने कल नोटिस की, ऑल ऑफ यू, आफ्टर द सेशन, immediately after the session, okay, you have to click the picture of your notes and send it to me on my personal message. You have to DM me, ठीक है? Notes. I want to see whether you write it neatly or not. ठीक है? Yesterday I saw notes of one of the students. I purposely asked him. I was, पता नहीं क्यों मुझे बहुत दिन से लग रहा था कि इसको मैं पूछूं. So he's supposed to be a very good student, right? Very intelligent one also. And the notes which I saw was horrible. मतलब वो क्या करेगा, वो पढ़ कभी पाएगा ही नहीं उसको. तो you just send me, ठीक है? Make it a habit. After the class, click the picture, send it to me. Whatever notes you have written. So in that case, you will never ever try to try to take this making notes process casual. So, ठीक है? हाँ बोलो. since my writing speed is slow, उससे कोई मतलब of नहीं. this slide and the another slide, I took screenshots, but I didn't write them down, but I took screenshots of them on my computer and I gave them and I kept them safe. ये तुम अभी तक नहीं करते आए हो ना, मतलब नोट्स नहीं बना रहे हो. Sir, but I did take the notes. I wrote the 3 laws in my notebook. तुमको मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेने के लिए. नहीं. फिर नोट्स का मतलब होता है नोट्स. कॉपी में तुम लिखोगे और धीरे और तेज लिखने की कोशिश करो. 11th तक ऐसे ही करते रहोगे क्या? नहीं. कभी तो सुधारोगे ना अपने आप. Yes, sir. हाँ, तो So लिखना है नोट्स. देखो, ये I'm पहला writing. अभी आज पकड़ाया है, अभी ऐसे बहुत है. Sir, I'm writing. So please एक नोट्स बार लिखना show बता रहा हूं मैं, अभी लिखोगे तुम. और समझे आ रहा हो जय? Yes, sir. अबे 2 मिनट ज्यादा लगेगा और क्या लगेगा. So this class notes, no? एवरी क्लास नोट्स यू हैव टू सेंड मी फ्रॉम नाउ ऑन. No, sir, like the previous class notes as well. No. Previous class, I see. I can't help in previous class, but of course, अभी तो from every class you should make it a habit from now on. Okay. पुराना तो I will ask your parents to check your notes. And try to write it neatly and quickly. वो तो करना ही पड़ेगा, आ रहा हो जाए तो सीखना पड़ेगा ना. If you don't know how to write, you have to learn. The next screen. बाकी सबने लिख लिया ये?
No, All sir, of you I'm noted Yes, writing. it? 2 minutes, sir. No, sir, I'm 3 writing. minutes, sir. हाँ लिखो लिखो. Just answer the poll once you are done, okay? क्योंकि done तो बहुत लोगों ने लिखा, मेरी भी समझ नहीं आ रहा किसने done लिखा है किसने. So I have floated a poll. So once you are done, answer it. Well done. So done. So two of you who have not yet answered, not yet written. Who has not written it? हाँ, क्लास वर्क पर्सनल में भेजना है. कविश शाह, जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हैं वो भेजना है आप लोगों को, ठीक है? I sent it, sir. Note this one.
Sir, done. Done, sir. चलो, so Sir. all of you noted it? Sir, can you go back to the Yes, last sir. slide for some time, sir? Hmm? Sir, can you go Sir. back to the last slide, sir? 2 seconds. Mm-hmm. No, slide before this. No, the one with the acceleration, this. This one. No, sir, the one with the like for the acceleration and deceleration. Yeah, this one, sir. यही तो ना, यही तो था. Yeah, yes. चलो, done. All of you noted it? Yes, sir. ठीक है. So what is your homework for next session? Nothing. आज जो किया है, revise it at least 5 to 10 times. Every or and concepts of physics कहाँ है देखें. Read the textbook. Start reading the textbook of concepts of physics, rest and motion. Did I give you anything from this to read? हाँ, दिया तो है ना पहले. We have already done it. Article something. Article 3.5. हाँ 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 हाँ. पढ़ना है बच्चों. ठीक है. और derivations at least 5 times. Write it, practice it. Okay? Do the derivations. So you can read it till example 3.7. Do example 3.7. Okay? And after that, कुछ questions तो है. कर सकते हो तुम. Example 5. Example 5. So which नहीं page? नहीं, example 5. अरे एग्जाम्पल में वर्कड आउट एग्जाम्पल होता है ना, उसमें 5th एग्जाम्पल लिख लो, पेज 42. चेक इट. ये करना है, ठीक है. सॉल्व. Exam. 6. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. 5, 6. Till which question you have done in the exercises? Sir, Question number 7. 5. Miss. 7 तक कर लिया ना. हाँ. Yes. तो अभी करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15
16, 17 and 18 and 19. So 13 से लेके 19 तक 1 3 13 to 19 from exercises. Okay, 7 questions from exercises and 1 question from solved exam, and practice at least 5 times the derivations. Sir, which Subhadip, question from solved example? Yes. क्वेश्चन नंबर ये तो याद नहीं मुझे. सॉल्व एग्जांपल में कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? 5 or 5 6. and 6. 5 and 6. ठीक है. So 7 questions from exercises, 2 questions from solved examples, and practice the derivations at least 5 times. ठीक है, करिए. चलो बाय. Bye, sir. Good गुड night. नाइट. Bye, sir. अरे Bye, sir. हाँ मिलेंगे हम. नहीं मिलेंगे हम लोग. हैप्पी दिवाली. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. Happy भगवान Diwali. से खूब Happy पटाखे Diwali, फोड़ो, sir. खूब खुश Diwali, रहो. sir. थैंक यू. Bye.